We also do the agro waste, which is turi, जिसको हम पंजाबी च कहते हैं. Right? So we take a combination. We have optimized the method, and we add our mycelium, our spawn, which is edible variety, Pleurotus oysteratus. So these are oyster mushrooms. They are not button mushrooms. They are oyster mushrooms, and so you can see they are grey oysters. Okay. So, and show the yield. Ma'am, from where do you get the spawn? So the master spawn we procured from DMR Sudan. Okay. Directorate of Mushroom Research. And then in our lab we now have the process, so we cultivate it on our own. We grow our own spawn. So students know how to develop their own seeds. Yes. Okay. They are the ones who have done this whole. So they do the labeling, they make the bags. Right. And this side are in the early stage. They are called the spawn run stage, and from here the yield has started. Okay. So every day, we can't say every day, but every 3-4 days we have a good yield. So ma'am, this is how many kgs? So this is 1 kg 1 bag, kg. and these are small ones, around 700 kg bags. Okay. So how much yield we can take it from 1 kg? Yes, sir. So from 1 kg, like this is our second flush. These are second flush. These are first flush only. So we get 3 flushes. Per flush we get around 200 for 3 times. So 600 per flush and 3 flushes. So we get around good amount of 1200 grams per bag. Okay, so initially the fungi colonization take about 21 days? Yes, sir. They are just in this process it is. They are still in the process. है ना? 12 They are in the process. And so this is fully colonized, and they have given even the second yield. This is the second yield. So they have started with the second flush, sorry. Right. So these are also fully colonized. Now we will start the process of harvesting. तो मैम सिर्फ ये ग्रे हिश है, और भी आपके पास पिंक, ब्लू वगैरह और शेड्स में? पिंक वैरायटी हम लोगों ने पिछले कोविड से पहले की थी, एंड बिकॉज ऑफ कोविड देयर वाज लिटिल हॉल्ट, बट ग्रे एंड वाइट वी आर कॉन्स्टेंटली टर्निंग एंड वी आर ग्रोइंग. अच्छा. Yes, there is a pink variety also. Very beautiful pink oyster mushrooms are also there. But so ma'am, do you dry them and then sell it? Yes, sir. So जैसे हमारे ये packets बन गए, so we sell them fresh as well. Okay. As well as we also dry, because we have the oven OTG. Right. We do the drying. Okay, ma'am, can you show how do you dry it? ओवन में कैसे रखते हैं, कितना, कौन से टेम्परेचर पे क्या करते हो? हाँ जी सर, वो हमारा प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से हम ट्रे में, वो ब्लैक वाली ट्रे में. हाँ जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना. हाँ है ना? और ये क्या ड्राई वाले हैं? सर नो, दीज आर फ्रेश. अच्छा, दीज आर फ्रेश वंस. हमने हार्वेस्ट किए हैं, दे एडिबल और सूप में, और दे 2 days. तो कैन वी बाय इट? यस. ठीक है, चलिए. सर आपका तो मैसेज दे देते हैं. नहीं, वैसे नहीं, हम विल बाय स्टूडेंट्स के लिए. लेट अस सी. दिख नहीं रहा है कि हम पहले काफ़ी ट्राई किए हुए थे. हाँ, ओवन के पास चलते हैं. सर इसको प्री हीट करना पड़ेगा फिर थोड़ा. कितने टेम्परेचर पे? सर हम लोग इसको नॉर्मल जो प्रोटोकॉल में है, कितने 120 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटिंग करते हैं. ठीक है. वंस इट इज द OTG इज लाइक 10 मिनट्स प्री हीट हो गया, देन द बिगेस्ट प्रिकॉशन दैट यू हैव टू यूज इज कटर लाम में 1-2 आपको बता देती हूँ कि we should never put them as such. We have to cut them vertically so that they have a high surface area, so that there is complete drying. Correct. That has to be done. And then we place it, and for 120 degree around for 30 minutes they are completely dry. अच्छा, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं पूरे? वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बट जो हमारा एक स्टेप है बिफोर दिस इज वी ऑलवेज डू सन ड्राइंग फर्स्ट for 30 minutes. Then this time is reduced. And sun drying also adds vitamin D to the mushrooms. क्या होता है? So उसमें थोड़ा vitamin D लेवल, कैल्सीफेरोन नाम का जो कंपाउंड है, कन्वर्ट हो जाता है. Nowadays you can tell what vitamin D sunlight does when you expose. सनलाइट जब पड़ती है इसके ऊपर तो क्या होता है? जो अर्गो कैल्सीफेरोल है इसमें प्रिकर्सर फॉर्म में, that gets converted into core calciferol. Okay.
विटामिन डी। करेक्ट। तो उसके बाद जब आप ड्राई कर लेते हो फिर उसको ग्राइंड कर लेते हो, हाँ, है ना, फिर जिसे एज अ पाउडर। grind करते हैं एंड देन these girls have also made cookies, mushroom rich cookies of the dried product. ओके। Yes, and cookies as well as candies they had made, and we had 2-3 events and cupcakes. अच्छा। जिसमें हमने सेल भी किया था, काफ़ी कितनी सेल हो गई थी, we had done good amount of sale. तो मैम इसको आपने अभी बड़े छोटे एरिया में किया हुआ है, डू यू प्लान टू स्केल अप? So initially we had started in lab, which was even Smaller smaller than- than this. Now we have a capacity of 25 to 30 bags running and simultaneously. ओके। And yes, if things will go positively, we will definitely look for more collaborations to increase the capacity. As of now, we are. So I will propose your innovation department, entrepreneur and innovation department, to institutionalize this concept, and we put up one organization which will do digital marketing of this, है ना, तो इनको कहीं जाना ना पड़े, यहीं से they get an order from here only. So now I just want to have one question here. Do you have surplus yield right now? और अभी आपके पास लग जा रहा है उतना कम पड़ रहा है क्या? अभी क्या So स्टेटस है? basically there are two things which I want to clear, that this pilot scale cultivation, whatever we are getting, we are giving it for sale to the faculty, और वो कल से ही नोटिस हमारा निकाला है हमने। पहले बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे थे, because these are the girls who are making the bags along with me, and we have to see that they are students, तो थोड़ा सा कई बार एग्जाम्स में हॉल्ट भी आ जाता है, हार्वेस्ट साइकिल थोड़ा। And second thing, sir, some of the yield is used by them also for their experiment purposes. So yes, we can say that as of now, keeping in mind the weather, it's very suitable. We are getting good yield. मैम ये सबस्ट्रेट के ऊपर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो कि जैसे अभी आप तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, सर हम लोग sawdust सॉडस्ट, और एग्रो वेस्ट कर रहे हैं, बट वी हैव ऑल्सो पब्लिश्ड अ पेपर इन विच वी हैव यूज्ड ड्राई लीव्स जो कंपोस्टिंग में हाँ, जाती हाँ, हाँ, हैं, एंड तो उनमें यील्ड्स का कुछ डिफरेंस? उसमें yield was marginally Lower. marginally less ओके। than with the sawdust and this. These are the optimum substrates actually of oyster mushroom. ओके। They decrease the yield, but there was no effect on the nutritional analysis Okay. composition. So how was the nutritional analysis done? So they have protocols for nutritional analysis of protein, ash content, अच्छा। minerals and carbohydrates. अच्छा, तो वो उसको जला के भी देखा आपने, उसका ऐश कितना बच गया? और And अच्छा अच्छा so this project it's from 2019. अच्छा। But pilot scale, जिसको हम इसको pilot scale कहेंगे सर, इसके ऊपर वाला scale जो है वो for that we need a little more time. Push. Yeah. मैं just want मेरे दो क्वेश्चन हैं हाँ पहले। जी sir. एक तो अभी जो करंटली आपका पैरेंट, बिकॉज लॉट ऑफ एफर्ट्स गोज इनटू दिस, Yes. नॉट ओनली फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स। Exactly. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स में आई नो दैट देयर आर सर्टेन हर्डल्स आल्सो, है ना, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम वो सारी समझते हैं, मैं उसको समझ के ही बात कर रहा हूँ। आई विल